Hello everyone, welcome to our channel Simple Nursing Notes. This video रे आमे already practical based MCQ और तार आंसर गुडी का स्टार्ट करी नहीं छे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ी सारलेनी ए वीडियो टी रे आमे 21 रु स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 21 which cardiac arrhythmia can be either acquired or congenital and can spontaneously disappear on its own or lead to ventricular fibrillation. ଏହି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରିଥମିଆଟି ଆଇଦର ଆକ୍ୟୁଆର୍ଡ ହେଇଥିବ या कंजेनिटाल ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ଆରିଥମିଆଟି ବାରମ୍ବାର ଡିସାପିୟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ ଆପେ ଆପେ ଦେନ୍ ଏହା ଲିଡ୍ କରୁଥିବ ventricular fibrillation को ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା व्हाट इज कार्डियक आरिथमिया कार्डियक आरिथमिया ହେଉଛି इरेगुलर हार्ट बीट बीटिंग ऑफ द हार्ट माने हार्ट बीट केतेबेले पूरा फास्ट हो जाए तो केतेबेले पूरा स्लो हो जाए Options are went back, premature arterial contractions, torsade D points, premature ventricular contractions. The answer is C, torsade D points. A torsade D point is specific type of abnormal heart breathing. Then question number 22. Which quality assurance or performance improvement technique is used to identify underlying process flaws? Small group processes, root cause analysis, people at fault processes, cause and effect. The answer is B. Root cause analysis is used to identify underlying process flaws. Question number 23. Which legal document will most likely contain the patient decision to not get cardiopulmonary resuscitation? ये हमको पचरा है कि क्यों लीगल डॉक्यूमेंट पेशेंट रो डिसीजन ऊपर निर्धारित होता है ऑप्शंस आर हेल्थ केयर सरोगेसी हेल्थ केयर प्रॉक्सी एडवांस डायरेक्टिव्स ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी द आंसर इज सी एडवांस डायरेक्टिव्स यह को एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव्स मध्य कहा जाए क्वेश्चन नंबर 24. Select the stage of pressure ulcer that is accurately paired with its characteristic. एठारे प्रेशर अल्सर रो स्टेज गुडिक दिया हिची एवं तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुडिक मध्य दिया हिची एमानक मध्यरु केउ पेयरटी करेक्ट अछि ता हमको बाछेबार अछि These are the options. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 एमानक सहित तार कैरेक्टरिस्टिक मध्य दिया हिची The answer is B. Stage 2. The epidermis and part of the dermis is damaged or lost. Stage 1 ର characteristic ହେଉଛି pressure ulcer remain intact, skin does not briefly lighten or blanch when touched. Stage 2 ତ ଆମେ already ପାଇ ସାରିଛେ. Stage 3 ହେଉଛି the loss of skin usually exposes some fat. It होची stage 3. Then stage 4 होची the wound has love and scar. Then question number 25. You have been assigned to care for a neonate who has been diagnosed with a tetralogy of Fallot. The mother asks you what the tetralogy of Fallot is. How should you respond to the mother? एठी पचरा हिची कि तुमे गोटे नियोनेट र केयर करूछो जेउ नियोनेट की टेट्रालोजी ऑफ फालोट द्वारा डायग्नोस होइछि से नियोनेट र मदर पचारुचंती कि व्हाट इज टेट्रालोजी ऑफ फालोट सेही क्षेत्र रे सेही मदर को कोन आंसर देबो द ऑप्शंस आर द टेट्रालोजी ऑफ फालोट इज ए congenital gastrointestinal disorder द टेट्रालोजी ऑफ फालोट इज ए congenital cardiac disorder द टेट्रालोजी ऑफ फालोट will affect the baby's reflexes The tetralogy of Fallot will affect the baby's ability to breastfeed. The answer is B. The tetralogy of Fallot is a congenital cardiac disorder. एवं एही डिजीज टी हेउची combination of 4 congenital heart defect. माने हार्ट चारोटी हार्ट डिफेक्ट रो कॉम्बिनेशन हेउची tetralogy of Fallot. Number 26. The protrusion of an internal organ through a wound or surgical incision is referred to as serosanguineous
dehiscence, evisceration, exudate. The answer is C. Evisceration. Evisceration कौन? जितेबले किसी सर्जिकल इंसिजन हेउ बा किसी वुंड हो जहा द्वारा कि अर्गन बाहर को पट्रिजन माने बाहर को बाहरी थाए ताहाकू कौन कहा जाए? ताहाकू एविसरेशन कहा जाए. देन आमे देखिबा डेहिसेंस रो मीनिंग कौन? एहा हेउची जितेबले सर्जिकल इंसिजन ओपन हो जाए ताहाकू डेहिसेंस कहा जाए. देन एक्सक्यूडेड रो मीनिंग हेउची से सर्जिकल इंसिजन बाउंड्रू जितेबले किछि सिक्रेशन हुए बा डिस्चार्ज हुए ताहाकू ही एक्सक्यूडेड कहा जाए. देन सीरोसांगुइनियस रो मीनिंग हेउची मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज जहा की ओपन वुंड रो सिक्रेट होई थाए. नंबर 27, which pain assessment scale is used exclusively for infants and neonates from 32 weeks of gestation to 6 months of age. इठी हमको पचराइची केउ पेन स्केल 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू 6 मंथ ऑफ एज न्यूनेट आउ इन्फेंट मानकर पेन असेसमेंट पाई यूज करा जाय थाए. ऑप्शंस आर द पिप्स पेन स्केल, द फ्लैग पेन स्केल, द फेसिस पेन स्केल, क्राइस पेन स्केल. द आंसर इज डी, द क्राइस पेन स्केल. हमर आंसर तो आमे पाई गले किंतु एई तीनोटी पेन स्केल केउ एज रो नियोनेट बा चिल्ड्रन मानक पाई यूज करा जाए ताहा भी देखिने बा. फर्स्ट आमे देखिबा पिप्स पेन स्केल केउ मानक पाई यूज करा जाए. एहा जेस्टेशनल एज रे ही यूज करा जाय थाए एवं एहार बयस सीमा हेउची लेस देन 28 वीक्स टू ग्रेटर देन 36 वीक्स जेस्टेशनल एज रे ही एहा पेन असेसमेंट पाई यूज करा जाए. देन फ्लैक्स पेन स्केल 2 मंथ थ्रू 7 ईयर इन्फेंट बा चिल्ड्रन मानक पाई एही पेन स्केल यूज करा जाए. देन फेसिस पेन स्केल 3 to 18 ईयर चिल्ड्रन मानक पाई एही फेसिस पेन स्केल यूज करा जाय थाए. देन क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is a hazard of immobility? फर्स्ट आमे देखिबा इमोबिलिटी रो मीनिंग कोन? जे कोनसी डिजीज कंडीशन द्वारा जेतेबेले पेशेंट रो कंप्लीट बेड रेस्ट होई थाए बा तारा एक्टिविटी बहुत लिमिट हो जाए माने बहुत कम हो जाए सेतेबेले सेही कंडीशन को ही इमोबिलिटी कहा जाए. तेबे एही इमोबिलिटी रो हैजार्ड गुडी को कोन? लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, इंक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी, वीनस वासोकंस्ट्रिक्शन, ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. द आंसर इज ए, लॉस ऑफ बोन कैल्शियम. इमोबिलिटी रो मीनिंग तो आमे जानिले किंतु ए लॉस ऑफ बोन कैल्शियम इमोबिलिटी रो हैजार्ड केतेबेले होई थाए जेतेबेले 6 मास बा ताठारु अधिक समय धरी एही इमोबिलिटी गोटे पेशेंट पाखरे देखा जाए सेही क्षेत्र रे लॉस ऑफ बोन कैल्शियम होई थाए. नंबर 29, हाउ मेनी डेली फीडिंग आर कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर ए न्यूबॉर्न? 8 to 10, 10 to 12, 6 to 8, 12 to 14. आंसर इज ए बी बोथ. कारण गोटे नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी रो डेली फीड 8 to 12 फीड बोली कंसीडर करा जाय छी. नंबर 30, द हार्मोन प्रोड्यूसेस मदर्स मिल्क इज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड कोलेस्ट्रम. द आंसर इज सी, प्रोलैक्टिन. इटा मने रखिबो फास्ट प्रेगनेंसी टाइम रे हमर जो प्रेगनेंसी हार्मोन गुडी को होची एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आउ अदर प्रेगनेंसी हार्मोन ता कोन करे ना प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करी. बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा प्रेगनेंसी हार्मोन गुडी का ड्रॉप हो जाए देन प्रोलैक्टिन टेक्स चार्ज. नंबर 31, which of the following is a life threatening acute complication of diabetes mellitus? Neuropathy, hypoglycemia, retinopathy, impaired microcirculation. The answer is B. Hypoglycemia is a life-threatening acute complication of diabetes mellitus. What is hypoglycemia? Low blood sugar बा body रा main source of energy low है बाको ही hypoglycemia कहा जाए. What is retinopathy? Decrease the retina. Result रे कौन हुए ना loss of vision होता है. Neuropathy रो meaning होची nerve damage or dysfunction of nerve एवं यही माइक्रो सर्कुलेशन रो मीनिंग है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल.
Number 32. Switches and staples are typically removed following surgery within 7 to 10 days if healing is considered adequate, 10 to 14 days if healing is considered adequate, 7 to 10 days if no further dressing are needed, 10 to 14 days if no further dressing are needed. The answer is A. 7 to 10 days if healing is considered adequate. Number 33. Which of these breath sound is considered normal and not adventitious? Vesicular breath sounds, fine rays, raunchy, wheezes. The answer is E. Vesicular breath sound. Vesicular breath sound ହେଉଛି normal and not adventitious breath sound. ଆଉ ଗୋଟେ breath sound ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ହେଉଛି bronchial breath sound. ଏହି vesicular breath sounds ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଶୁଣାଯାଏ? Over the lung tissue. Then bronchial breath sounds କୋଉଠି ଶୁଣାଯାଏ? Over the tracheobronchial tree. Number 34. Which type of burn leads to the greatest degree of pain? A first degree burn, a second degree burn, a third degree burn, a fourth degree burn. The answer is B. A second degree burn leads to the greatest degree of pain. Number 35. Babies should double their birth weight by the 5th to 6th month, 3rd to 4th month, 4th to 5th month, 5th to 7th month. The answer is C. 4 to 5 months. ଏହି 4 to 5 months रे बेबीर weight तार birth weight तारू double होइथाए. Number 36. Which of the following is best for a client who has difficulty swallowing and chokes frequently? Options are a liquid diet, tilting the head back when swallowing, tucking the chin in when swallowing, following each bite with a drink of water. जो पेशेंट मानकर स्वालो कला बेले डिफिकल्टी हुए एवं खाइला बेले तांकर बारंबार चोकिंग हुए सेमानक पाई ए ऑप्शन मानक मध्यरु कोटी बेस्ट हेबो ताहा हमकु बाछिबार अछि. द आंसर इज सी. टकिंग द चेन इन व्हेन swallowing. जते बेले खाउथबो माने किछि ढोकिबा को ट्राई करूथबो सेते बेले टकिंग द चेन को टक करिबो. तार इमेज टी मु देई दोछि इठु बुझी पारिबे टकिंग द चेन कोन. Number 37. How long can women lactate for? Indefinitely, 12 to 18 months, 18 to 24 months, 30 to 36 months. The answer is A. Indefinitely. ଏହି indefinitely ର meaning ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚୟତା. ମାନେ ଏହାର meaning ହେଉଛି କି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ lactation ବା breastfeed continue କରିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ milk is being removed from the breast. Number 38. Which anatomic malformation are associated with the tetralogy of Fallot? Tetralogy of Fallot disease सहित केउ anatomic malformation associated बा जड़ित सेटा ए ऑप्शन मानक भितरु बाछिया पई कोआइचे. These are the options. The answer is D. A subaortic septal defect, an overreading aorta, right ventricular hypertrophy and right ventricular outflow. Number 39. Your 32-year-old female patient has erythema marginatum, sydenham chorea, epistaxis, abdominal pain, fever, cardiac problems and skin nodules. What disorder we suspect based on these signs and symptoms? ଏହି साइन एंड सिम्पटम गुड़िक बेस करके केउ डिसऑर्डर टी मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट हेउची इठी हमको पचराइची. द ऑप्शंस आर ल्यूकेमिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस, न्यूमोसिस्टाइसिस जीरोवेक, rheumatoid arthritis. The answer is rheumatic fever. ଏହି साइन एंड सिम्पटम गुड़िक बेस करके ଏହି डिसऑर्डर टी rheumatic fever बोली सस्पेक्ट करा जाउची. आंसर त हमें पाई गले. देन आमे देखिबा ल्यूकेमिया र मीनिंग कोन. ल्यूकेमिया हेउची कैंसर ऑफ द बॉडी र ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू. बॉडी र ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एवं ता सहित बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम रे कैंसर हेबा को ही ल्यूकेमिया कहा जाए. देन व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस?
It is an infection caused by fungus called histoplasma. Pneumocystis jirovec हेउची गोटे yeast like fungus एवं यह pneumocystis pneumonia रो causative organism. देन आमे देखिबा rheumatoid arthritis रो मीनिंग कोन. यह हेउची chronic inflammatory disorder जहा कि बहुत सारा जॉइंट गुडिको ऊपर एहार प्रभाव पड़ी थाए एवं ए rheumatoid arthritis रे कोन हुए ना बॉडी रो ह्यूमन सिस्टम तार निजर ओन टिश्यू गुडी को अटैक करि थाए. व्हाट इज rheumatic fever? Rheumatic fever is a disease that can affect the heart, joints, brain and skin. ई जो क्वेश्चन रे देछि एरिथमा मार्गिनाटम आर मीनिंग कोन देखिबा. यह हेउची गोटे रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी एरिथमा बा रैशेस. तार इमेज देई देबी मु देखिले जानि परिबो से रैशेसटा केमिति एवं एहा rheumatic fever रे ही बेसिकली देखा जाय थाए. देन आमे देखिबा सिडेनहाम कोरिया रो मीनिंग कोन. एहा हेउची गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एवं ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया द्वारा एही डिसऑर्डर टी होई थाए. देन एपिस्टाक्सिस रो मीनिंग हेउची ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. Then question number 40. Select the cranial nerve that is accurately paired with its name. इथे हमको कहै छी कि cranial nerve गुडी को सिलेक्ट करबा को जेउ गुडी की accurately तार नाम सहित paired होई छी. The first cranial nerve, the trochlear nerve. The 12th cranial nerve, the hypoglossal nerve. The 10th cranial nerve, the olfactory nerve. The 13th cranial nerve, the auditory nerve. The answer is B. The 12th cranial nerve, the hypoglossal nerve. 12th cranial nerve टी हेउची hypoglossal nerve. एही hypoglossal nerve रा काम कोन. एही nerve टी कंट्रोल करि थाए टंग मसल को एवं it is provide motor inversion to tongue muscle. हमर करेक्ट आंसर तो पाई गले. देन ए तीनोटी जांक जो भूल अछि ताको हमें करेक्ट करनबा. द टोचलर नर्व हेउची फोर्थ cranial nerve. एहार काम हेउची moves the eyeball. The first cranial nerve is the olfactory nerve. एहार काम हेउची transmit sense of smell. एवं द ऑडिटरी नर्व हेउची 8th cranial nerve. एहा को vestibulocochlear nerve मध्य कहा जाय. एहार काम हेउची transmit sound and balance information from inner ear to brain. एहा साउंड और बैलेंस इंफॉर्मेशन को इनर ईयर टू ब्रेन पाखु को ट्रांसमिट करथाए.